Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. तो जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो सारे फटाफट से कर लें ताकि सब मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकें. Before the class, once again, I would like to introduce myself Abhilasha Breja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IPM College. I have also done B.Ed from NTU. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organization management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Also, I take up a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. So right now I'm associated with two of the very known academies, Calra Commerce Academy and Sign Tutorials. Hi Yamini, good evening. BREJ10 is my referral code. You can use this referral code to purchase any of the subscription, either Plus or Iconic. Depends on your choice. With this particular referral code, you can easily get a discount of 10%. So let's proceed with chapter number 8, controlling. Let's see what all topics we are going to discuss today in today's session. तो आज हम करेंगे अपना MCQ cover along with filling the blanks, true, false और case based MCQs. आज हम ये 4 तरीके के टॉपिक्स आज की क्लास में कवर अप करेंगे. तो कॉमर्स 365 के बारे में आप सब जानते हैं. इट्स अ टेलीग्राम ग्रुप. अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स फॉर द क्लासेस. आपको सारी क्लासेस के बारे में पता लगता रहेगा, साथ ही आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास कब है और किस क्लास में क्या कराया जाने वाला है. So let's start with chapter number 8, controlling. So are you all ready for the session? जल्दी से बता दो. Ready हो for the session today? जल्दी से. कहाँ रह गए सारे? So let's start with question number 1. That is, first of all, we'll be covering MCQs. तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. गुड इवनिंग पवनप्रीत कौर. चलो. It is the process of ensuring that events conform to plans. A. Planning. B. Controlling. C. Organizing. या D. Directing. Process that ensures events are conformed to plans. Perfect. Very good, Yamini. So the correct answer is B. Controlling. Good evening, Abhigyan. Next. Very good. The controlling function is performed by A. Top level management, B. Lower level management, C. Middle level management, या D. All of the above. Good, Abhigyan. Very good. Good, Yamini. Perfect. So the correct answer is yes, it's D. All of the above. Good, Pavanpreet. Very good. Controlling is a function that is performed at all the levels. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? It's pervasive in
nature. Next, controlling function brings the management cycle back to the A. Organizing process, B. Directing function, C. Planning function, या D. None of the above. कंट्रोलिंग फंक्शन हमारी मैनेजमेंट साइकिल को कहां पे वापस लेकर आता है? गुड गुड. मेरा मन कर रहा है बेटे, मेरा मन कर रहा था आज एमसीक्यू कराने का. गुड यामिनी, परफेक्ट. द करेक्ट आंसर इज सी, प्लानिंग. हमारे 5 फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या करता है? ये प्लानिंग को अपनी साइकिल पे वापस लेके आता है. परफेक्ट. नेक्स्ट, deviations are said to be positive in nature when planned performance is more than actual performance. यानी कि planned performance is more than actual performance. Actual performance is more than planned performance. Both planned and actual performance are same. यानी कि planned performance and actual performance are same या none of the above. अभिज्ञान, एक बार आंखें खोल के आंसर्स दो बेटे तुम प्लीज. परफेक्ट. क्या होता है हमारा? वेरी गुड. गुड है. गुड इवनिंग राजदीप, वेरी गुड इवनिंग. बिल्कुल, जब प्लान परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा होती है प्लान परफॉर्मेंस से, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पॉजिटिव डेविएशंस. नेक्स्ट, which of the following is not an importance of controlling function? A. It ensures order and discipline. B. It restricts coordination in action. C. It helps in judging the accuracy of standards. या D. It improves employee motivation. अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुड गुड गुड. लास्ट में आप डाउनलोड कर सकते हो. परफेक्ट. तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या नहीं है? बी. इट रेस्ट्रिक्ट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. नेक्स्ट, which of the following statements does not highlight relationship? This is not in the syllabus. Next, which of the following statements is true with respect to controlling function? A. It is a forward looking function. B. It is a backward looking function. C. Both A and B या D. None of the above. अभिज्ञान, जब हमारी क्लास खत्म होती है तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है पीडीएफ को डाउनलोड करने का. आप वहां जाके पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो. परफेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज, ये हमारा फीचर है जो क्या कहता है? कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, identify the correct sequence of the steps involved in the controlling process. A. Measurement of actual performance, taking corrective action, setting performance standards, comparison of actual performance with analyzing deviation. Good evening, Selonia. Good, how are you? After a long time. तुम्हारे तो बर्थडे preparations बहुत लंबी हो गई, बर्थडे celebrations. So B, it's comparison of actual performance with standards, setting performance standards, measurement of actual performance, analyzing deviations and taking corrective actions. C, it's setting performance standards, measurement of actual performance with standards, analyzing deviations, setting performance standards. Yes, C कैसे बोल रहा हूँ? या D, taking corrective actions, measurement of actual performance with standards, analyzing deviations and setting performance. हाँ, मैं वही कह रही हूँ, तुम्हारी तो बर्थडे सेलिब्रेशंस बहुत ही लंबी हो गई थी. आई एम गुड. So the correct answer is yes, it's C. क्योंकि हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स,
Second is measurement of actual performance. Third is comparison of actual performance. Next is analyzing deviation, and last is taking corrective action. हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, wrong है. Next, which of the following is a technique used for measuring actual performance? A. Random sampling. B. Personal observation. C. Performance reports. या D. All of the above. हाँ, मैंने तभी ऊपर सही करके लिख दिए हैं सारे आंसर. So the correct answer is yes, it's D. All of the above. Perfect. Next, the comparison of actual performance with the planned performance becomes easier if the standards are set in A. Qualitative terms, B. Quantitative terms, C. Either of the above, या D. None of the above. Good evening, Adolf. परफेक्ट. हमारे लिए कब डिफिकल्ट हो जाता है? जब हम क्वांटिटी, इजी कब हो जाता है? जब हम क्वांटिटी की टर्म्स में सेट करते हैं. क्यों? क्योंकि नंबर की टर्म्स में सेट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आज 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना. आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट, सो डोंट मिस टुडे सेशन एट शार्प 8 PM. क्लियर? गुड इवनिंग जिया. जिया, आज 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना, जरूर आना. आई हैव अ बिग थिंग टू अनाउंस. नेक्स्ट, this concept of control management is based on the belief that if you try to control everything, you may end up controlling nothing. A. Critical point control. B. Key result areas. C. Management by exception. या D. None of the above. रिवाइज भी करवाऊंगी और कुछ बहुत बड़ा भी बताऊंगी. परफेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये किसके पॉइंट में आता है? ये आता है एनालाइजिंग डेविएशंस में. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं. गुड इवनिंग कनक. नेक्स्ट, when the deviations between the actual performance and the planned performance are within the limits, यानी कि हमारी पहुंच तक होती हैं, तो A. limited corrective action is required. B. no corrective action is required. C. a major corrective action is required. या D. none of the above. ध्यान से जिया, जब बहुत लिमिट में होती है, सपोज हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस 200 थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी 190 हुई है, तो इस सिचुएशन में हमें कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये विद इन द लिमिट होती है. मैंने आपको पहले दिन ही क्या बताया था इसमें कि कभी भी हमारी डेविएशंस जीरो नहीं होंगी. कभी ऐसा नहीं होता हमने प्लान 200 किया हो तो हमारी एक्चुअल भी 200, ये कभी नहीं होता. कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस चलता ही रहता है. लेकिन अगर बहुत थोड़ा सा होता है, यानी कि अगर हमारी रेंज में ही होएगा, तो हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, जब रेंज के बाहर हो जाता है तो हमें एक्चुअली में प्रॉपर एक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है. क्लियर हुआ? सलोनी, क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पॉइंट में किसी को? नहीं नहीं, मैं आई एम परफेक्टली ऑल राइट. थैंक यू जिया. चलो,
It is in an artificial plants manufacturing unit. The standard output set for a worker is 50 units per day. Dinesh produces 48 units in one day. In the given case, the value of deviation is. No, I'm perfectly fine. Perfect. A minus 2, B it's plus 2, C 48 या D none of the above. यानी कि प्लान परफॉर्मेंस है हमारी 50 और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो रही है 48. तो डेविएशंस क्या आएंगे हमारी? आई एम गुड. वो आवाज यार थोड़ा आजकल सर्द गर्म हो ही रहा है. टुडे इट वाज वेरी अच्छी वाली धूप ना, इसलिए. परफेक्ट. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी -2. परफेक्ट. नेक्स्ट. The need for the controlling function is felt in A. Business organizations, B. Political organizations, C. Social organizations या D. All of the above. हमें कंट्रोलिंग फंक्शन की नीड कहाँ कहाँ पे जरूरी होती है? परफेक्ट. गुड इवनिंग अमरेश. परफेक्ट. वेरी गुड अमरेश. आते ही आंसर सीधा. परफेक्ट. ओ थैंक यू जिया. परफेक्ट. So the correct answer is it's D, all of the above. Next. Om Prakash has set up a small business unit for the manufacturing of detergent. In order to market the detergent in the local residential area, he has appointed a team of 10 salesmen. Each salesman is expected to sell at least 200 units of the detergent within a week's time. एक हफ्ते का टाइम है सेल करने का. Identify the point of importance of controlling being highlighted in the above case. A. Controlling helps in judging the accuracy of the standards. B. It ensures efficient use of the resources. C. It helps in improving employee motivation. या D. It facilitates coordination in action. Perfect. And the correct option is it helps in improving the employee motivation. Good. Next. Controlling is known as a backward looking function because, ध्यान से देंगे, A. It relates to future course of action. B. It is like a post-mortem of the past activities. C. To find out deviation, it aims at improving the future performances. या D. All of the above. Good, Yamini. Amazing. Perfect. परफेक्ट. डी और बी नहीं, सिर्फ बी आएगा बिकॉज कि एक्चुअली में बैकवर्ड लुकिंग करने का हमारा मतलब क्या होता है कि हम उसको खरोदे, हम ये देखें कि हमने क्या क्या किया था और हमारी कहाँ कहाँ कमी रही है, क्योंकि जहां जहां भी हमारी कमी रही है हमें वहां वहां पे अपनी कमी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है कि वो चीजें हमारे फ्यूचर में ना आ सके. क्योंकि हम डेविएशंस नहीं देखते इसमें, हमें पीछे जाके डेविएशंस क्यों देखनी है, हमें बस ये देखना है कि हमने पास्ट में कैसे कैसे काम किया था. अगर हम हर चीज में डेविएशंस देखेंगे ना जिया, हम और डीमोटिवेट हो जाते हैं. नेक्स्ट. Reducing the workers' absenteeism in a factory by 20% is an example of A. Quantitative standards,
B. Qualitative standards. C. Deviations. या D. None of the above. Good, very good. Perfect. Perfect. So the correct answer is A. Quantitative. Quantity के terms में. Saloni, come out from your birthday now. It's a high time. सब कुछ 2 दिन में डिब्बा गोल हो गया तुम्हारा है. यहाँ पे क्वालिटी की फॉर्म में क्या बात हो रही है? नंबर ही तो बोल रहे हैं. सपोज अगर आज 10 बच्चे एब्सेंट है तो हमने यही तो कहा कि 10% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. कम अप सलोनी नाउ, इट्स अ हाई टाइम. Next, Yash runs a logistic company. The tour in charges of each trip in the company are expected to submit a report to the event manager on the completion of every trip. Identify the step in the controlling process being described in the above line. Clear? A. Setting standards. B. Measurement of actual performance. C. Taking corrective actions. या D. Analyzing the deviations. Perfect. And the correct answer is measurement of actual performance. Perfect. Next. In a marketing firm, the financial manager pays more attention towards an increase of 3% in the marketing cost as compared to 15% increase in the courier experiences. Identify the concept being used by the manager. A. Management by exception. B. Critical point control. C. Corrective actions. या D. None of the above. Perfect. Very good. Good, Yamini. Good. More answers. 19 CPC. Okay. Perfect. Jia, the correct answer is CPC. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे की रिजल्ट एरियाज के ऊपर पहले फोकस कर रहे हैं ताकि वहां से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके. नेक्स्ट. Controlling is needed at dash levels. A. Top. B. Middle. C. Lower. या D. All of the above. Controlling is needed at dash levels. Perfect. Controlling is needed at all the levels because controlling is all pervasive in nature. Next. Controlling is related to A. Results, B. Individuals, C. Things, या D. Managers. कंट्रोलिंग हमारी किससे रिलेटेड होती है? वेरी गुड, वेरी गुड. परफेक्ट. कंट्रोलिंग हमारी रिलेटेड होती है रिजल्ट्स के साथ. गुड. जिया, तुम एक बार इसकी ना गो थ्रू करना है इस चैप्टर को. बहुत तुम मार खा रही हो पीछे. नेक्स्ट. First step in the controlling process is A. Taking corrective actions, B. Analyzing the deviations, C. Determining the standards, या D. Measurement of actual progress. हाँ sure, please go ahead once. Perfect. First step आता है determining standards या setting performance standards. Perfect. Next.
Cost of rupees 100 per unit is an example of dash standard. A. Quantitative. B. Qualitative. C. Both A and B या D none of the above. Oh God, the shore of the autos. सीधा सीधा कह रहा है, कॉस्ट की बात हो रही है, 100 रुपए की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, यानी कि क्या हो जाए? ए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. सॉरी. Next. Hina Sweets is a renowned name for quality sweets since 1935. Harsh, the owner of Hina Sweets, was worried as the sales had declined during the last 3 months. When he inquired about the sales manager reported that there were some complaints about the quality of sweets. Therefore, Harsh ordered for sample checking of the sweets. Perfect to Amrish, perfect. Identify the step taken by Harsh that is related to one of the functions of management. A. Measurement of actual performance. B. Setting performance standards. C. Analyzing the deviations. Or D. Taking corrective actions. So the correct answer is perfect. It's A. Measurement of actual performance. Perfect. Isha Machines was a renowned name for quality sewing machines since 1960. Mr. Suresh, the owner of Isha Machines, was worried as the production had declined during the last 3 months. He directed the production manager to find out the reason. The production manager ordered the first supervisors to prepare a performance report for the workers working under them. Identify the step taken by the production manager that is related to one of the functions of management. A. Setting standards. B. Measurement of actual performance. C. Analyzing the deviations. Or D. None of the above. Perfect. Very good. So, the correct answer is more answers. Perfect. It's B. Measurement of actual performance. Good. Next. Whirlwind Enterprises was a renowned name for manufacturing quality washing machines since 1965. When the profit of the last year declined, Mr. Ahmed, the owner of Whirlwind Enterprises, asked the general manager to prepare a profitability report of the company, including gross profit ratio, net profit ratio, etc., beside using other techniques to assess the company's performance. Identify the step taken by Mr. Ahmed, which is related to one of the functions of management. A. Setting standards. B. Taking corrective actions. C. Measurement of actual performance. Or D. Analyzing the deviation. Perfect. So the correct answer is C. Measurement of actual performance. Perfect. Next. Planning in the absence of control. This is not in the syllabus. When does the measuring of actual performance becomes meaningful? ध्यान से. A. When the standards have been set. B. When the standards have not been set. C. When the standards are more than the need. Or D. When the standards are less than the need. कल तो आई थी सलोनी, आज पता नहीं कहाँ रह गई. Perfect. So the correct answer is when the standards have been set. Next.
Which of the following qualities the standards should have? A. Achievable. B. Measurable. C. Flexible. या D. All of the above. पता नहीं बेटे क्यों नहीं आते. आई हैव नो आइडिया. सत्यम भी कल तो आया था. कल तो आया था सत्यम. Perfect. And the correct answer is D. All of the above. An effective control system helps to A. Achieve the objectives. B. Boost the employee's morale. C. Efficient use of the resources. या D. All of the above. Perfect. So the correct answer is yes, it's D. All of the above. Perfect. Next. An efficient control system helps to A. Accomplish the organizational objectives. B. Boost the employee morale. C. Judge the accuracy of the standards. Yeah, D. All of the above. Very good, good, good. Perfect. Perfect. So the correct answer is system helps too. So the correct answer is it's D. यानी कि importance की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो accomplishing organizational goals, increasing the employee motivation, or judging the accuracy of standards. So the correct answer is all of the above. Next. Controlling function of an organization is A. Forward looking. B. Backward looking. C. Forward as well as backward looking. या D. None of the above. Perfect. So controlling function क्या होता है? It is both backward as well as the forward looking. Jagrit, please don't spam. Don't spam. No need to spam at all. So with this, we have come to an end of the MCQs. Let's proceed to second topic, that is fill in the blanks. So, आप इसको 1 और 2 करके आंसर्स दे सकते हो. करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन 1 रहेगा, सेकंड ऑप्शन 2. If the controlling function is separated from management, all the remaining activities will become A. Meaningless या important. क्योंकि मेरा मन था बेटा ऑब्जेक्टिव लेने का, इसीलिए. परफेक्ट. तो वो क्या बन जाएगा? मीनिंगलेस. परफेक्ट. B. Second. The controlling function of management is completed at dash the managerial levels. A. All. या B है top and middle. परफेक्ट. तो किस पे बन जाता है? At all the managerial levels. Perfect. Next. The production cost on every unit to be ₹100 is the dash type of standard. A. Qualitative. B. Quantitative. So the correct option is yes, it's B. Quantitative. Perfect. नहीं यार, मैं क्यों करूं एग्जाम कैंसिल? हम टीचर्स आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे एग्जाम? भगवान करे मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाए और आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होए. हम आपके लिए इतना डेटा कलेक्ट करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं और हम क्यों कहेंगे भगवान जी को कि एग्जाम कैंसिल कर दें? आई विश टू गॉड कि जरूर सब्जेक्टिव हो, नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज.
But now it's a great news is coming day by day. The cases have started declining also. Cases अब बहुत कम हो रहे हैं. So that's a very pretty good news कि अब तो for sure board होएगा, that too also on a subjective basis. हाँ बिल्कुल बेटा वही होना चाहिए और होगा भी वही, नो वरी. नेक्स्ट, comparison of actual performance with standards is dash stage of controlling process. Third या last? हो जाएगा सब हो जाएगा. तो कंपैरिजन कौन सा स्टेप होता है हमारा? गुड जिया, परफेक्ट. कंपैरिजन कौन सा होता है? दिस इज नोन एज द थर्ड स्टेज of controlling process. Next, deviations are looked at in the context of a deviation tolerance limit या two profits. बेटा अब हर चीज अगर आपके हिसाब से एक्सपर्ट होने लग जाए तो कैसे काम चलेगा? टीचर्स ने तो अपना सिलेबस द नेक्स्ट डे ऑफ द बीएसटी एग्जाम ही शुरू कर दिया था. फिर मेरी तो ये रिवीजन चल रही है. फिर मैंने तो 4 चैप्टर करा दी, मैं 4 चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूँ. So the correct answer is deviations are looked in the context of deviation tolerance limit. Next, according to the principle of critical point control, the attention is focused on the A key result areas या significant deviations. बिल्कुल होने वाले हैं. ऑल दी बेस्ट अमरीश. तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किसके ऊपर फोकस करता है? परफेक्ट, ये फोकस करता है हमारे की रिजल्ट एरियाज के ऊपर. लास्ट, according to the principle of management by exception, the attention is focused on significant deviations या key result areas. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक है बेटे, मैं दे दूंगी, आप मुझे अपना रोल नंबर बता देना, मैं दे आऊंगी. अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं तो सारी दुनिया के ही पेपर ना दे देती. So management by exception, it is focused on significant deviations. Perfect. So with this, we have come to an end of MCQ also. Now let's proceed to true and false. Yes. So same way आप TF लिख सकते हैं. T means true and F means false. Only thorough control plans are ensured to be implemented. True or false? एक मिनट जिया, ध्यान से. जो प्रॉपर प्लान्स बने होते हैं हम सिर्फ उनको ही कर सकते हैं ना. ठीक है बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं दे आऊंगी. आप चिल होके ना खेल कूद करो. ठीक है, गुड अमरीश. So the correct answer is A, true. Next, control has no relation with the result. True or false? Perfect, Saloni, very good. Control has no relation with the result. It's totally false. Third,
It is very easy to decide the qualitative standards. क्वालिटी की फॉर्म में डिसाइड करना बहुत इजी होता है. Good Yamini, good Saloni. So the answer is false. क्वालिटी की फॉर्म में हम बिल्कुल भी इजीली डिसाइड नहीं कर सकते. Let it be Saloni, कोई बात. Next. Action is the essence of control. True or false? Action is the essence of control. True or false? Good, good, very good, Gia. Perfect. So the correct answer is true. Next. There is no need to pay attention to the principle of exception for effective control. True or false? Very good. So the correct answer is yes, it's false. Next. To consider controlling the last function of management will be a mistake as it brings back the management cycle to the planning function. True or false? अगर हम ये सोचते हैं कि कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन है तो ये हमारी गलती है, क्योंकि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअली में हमारे प्लानिंग को दोबारा ट्रैक पर ले आता है. जिया ध्यान से, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था. ध्यान से, ध्यान से जोगिंदर, ध्यान से. परफेक्ट, इट्स ट्रू. तो ऑब्वियसली जब हम प्लानिंग का फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग प्लानिंग को दोबारा लेकर आता है. यस, इट्स परफेक्टली ट्रू. Next, control directs all those activities and efforts which are made to realize the desired goal. True or false? Good, good, good Yamini, good. Perfect. So the correct answer is it's true. The corrective action is needed when deviation is within the limits. Yes, it's false. जब हमारे within the limits होंगे तो हमें corrective actions की जरूरत ही नहीं होगी. Next. Standards are such milestones to realize which every organization remains eagerly wishing. Good, good, very good. Good, good, good. So the correct answer is true. Next. It would be better अगर आप यहीं पे concentrate करो. आप जवाब मत दो कोई भी please, वो अपने आप चुप हो जाएगा. ठीक है? Next. According to the principle of management by exception, controlling only the important activities is advantageous. Controlling only the important activities is advantageous. It's false. Important activities को control करना, it's not at all advantageous. Perfect. So next we are to case based MCQs. अब हम case based करेंगे. एक case study आएगी. What you all have to do is just click the picture for the same और उसके basis पर हम आगे 4 question के answers करेंगे. Next. Vinay was the Chief Operating Officer of Easy Solutions Limited, a company providing advanced software solutions to Indian Defence Services. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning enough profits. But from the last 1 year, they realized that through the business is getting big orders, which are being fulfilled on time, even then the revenues kept on decreasing. Vinay was not able to find out where the problem was.
He started keeping a close check on the progress of activities as he could sense that something was wrong. He wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vinay appointed a cybersecurity expert who monitored the company's processes and found out that the computer operator was deleting the entries from the computers and pocketing the revenues. He was caught and handed over to the police. This created an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing the dishonest behavior on the part of the employees. Clear? So, please click the picture. Done. So, on the basis of this, we will be covering 4 questions. Here is first question for all of you. Which management function proved helpful in creating an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing the dishonest behavior on the part of the employees? A. Planning, B. Organizing, C. Directing, or D. Controlling. Perfect. So the correct answer is D. Controlling. Next. What did the measurement of performance reveal? A. The company was earning enough profits. B. Declining revenues despite getting big orders which were being fulfilled on time. C. The company was running successfully. Yeah, D. All of the above. Perfect. So the correct answer is declining revenues despite getting big orders which were being fulfilled on time. Next. What did the analysis by Vinay reveal? A. Nothing was wrong. B. The computer operator was deleting the entries from the computers and pocketing the revenues. C. Vinay was not able to find out where the problem was. Yeah, D. None of the above. Perfect. The computer operator was deleting the entries from the computer and pocketing the revenues. Good. Next. What corrective action did Vinay take? A. He did not take any action as no major damage was done. B. Computer operator was caught and handed over to the police. C. Computer operator was warned with direct consequences. Yeah, D. None of the above. Perfect. More answers. Yeah, sure. So the correct option is computer operator was caught and handed over to the police. क्यों जिया तुम्हारा उडारियां शुरू होने वाला है? Next. Sameer Sweets, a renowned name for quality sweets since 1950, had maintained its standards even since then. It is an ancestral sweet shop and Sana, the present owner of Sameer Sweet, is the third generation entrepreneur who has taken the charge of the sweet shop from her father. Sana has been handling her responsibility exceptionally well, except that she was worried as the sales had declined during the last 3 months, despite her best efforts and involvement in the business. When she inquired from the sales manager, Ajay, he reported that there were some complaints about the quality of sweets from many customers recently. Therefore, Sana ordered for sample checking of sweets by her quality control team. The team investigated and reported to Sana. She realized that during the peak demand, quality was being compromised by her team to satisfy the customer. She decided to invest more capital in order to increase the production.
to be able to meet the increasing demand, especially during the peak seasons like festivals and marriage catering. Haha, chalo. Dash, a node name for quality sweets since 1950, had maintained its standard ever since then. Which step does this represent in the controlling process? A. Setting performance standards. B. Measurement of actual performance. C. Comparison of actual performance with the standards. D. Analyzing the deviations. Perfect. It's A. Setting the performance standard. Next. Dash, sales had declined during the last 3 months. Which step does this represent in the controlling process? A. Measurement of actual performance. B. Comparison of actual performance with the standards. C. Analyzing of the deviations. D. Taking corrective action. That's good, Kunal, if you're back, but don't spam. कैसे पता लगा कि सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं? कैसे पता लगेगा? जब हम मेजर करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है या नहीं हो रही है. नेक्स्ट, Sana ordered for sample checking, ध्यान से, of sweets by her quality control team. Which step does this represent in the controlling process? A. Measurement of actual performance. B. Comparison of actual performance with the standards. C. Analyzing of deviations. D. Taking corrective actions. Perfect. So it's A. Measurement of actual performance. Next. बेटा कंपेयरिंग से एनालाइज होएगा कि डेविएशंस कितनी है. हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पास्ट का पता लगेगा. फिलहाल से तो हमारी डेविएशंस निकलेंगी कंपेयर करने से. She decided to invest more money in order to increase the production to be able to meet the increasing demand. Which step does this represent in the controlling process? A. Measurement of actual performance. B. Comparison of actual performance with the standards. C. Analyzing the deviations. D. Taking corrective actions. So the correct answer is perfect. It's D. Taking the corrective action. So here is the last case study for all of you. A critical point control CPC approach is followed by McDonald's in the cooking and handling process so that any food safety threat can be prevented, eliminated, or reduced to an acceptable level. Hence, continuous monitoring of activities are undertaken to ensure that the process is right at each critical point control. The main principle followed here for cooking at McDonald's is less amount many times, which can ensure the high quality and high fresh level of the food. For instance, if 4 hamburgers have to be made, a worker cannot cook all the 4 hamburgers at one time. The time figured out for making one hamburger is 145 minutes. Moreover, nearly all food in the McDonald's have the specific holding time. The holding time for hamburger is 10 minutes and for French fries is even 7 minutes. If it is not sold within that time, it is thrown away. Also, the temperature of the milk sent by the supplier must be under 4 degrees Celsius. Otherwise, it will be returned. हाँ बिल्कुल है 8 बजे मेरी क्लास. Clear? Here is question number 1. Which of the following steps involved in the controlling process is discussed in the above line? A. Analyzing deviations. B. Taking corrective action. C. Analyzing deviations. D. Both A and B. कुणाल, एक तो ना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी अगर तुमने बार बार स्पैम किया तो. प्लीज यार, डोंट स्पैम अगेन एंड अगेन. Don't spam. Correct. So the correct answer, it may be A also and it can be C also. Next.
यहीं पे ही है बेटा, YT पे ही है. Which of the following statement is true with respect to critical point control? A. Control focus on key result areas. B. Critical point control CCPs may be located at any point in the food production plant where hazards need to be prevented, eliminated, or reduced to acceptable levels. C. It helps in saving time and thus manager can focus on other relevant issues. Yeah, D. All of the above. Perfect. Perfect. And the correct answer is it's D. All of the above. Next. Identify the point which highlights the importance of the controlling function in the above text. A. Accomplishing organizational goals. B. Making efficient use of the resources. C. Judging the accuracy of the standards. Or D. All of the above. So its point of importance. Perfect. Yes, it's D. All of the above. Last. Which feature of controlling is highlighted in the above text? A. Controlling is a continuous process. B. Controlling is all pervasive. C. Action is the essence of control. या D. Controlling is the forward looking process. It's थोड़ा सा उल्टा हो गया यार. CPC. यामिनी नई कलर की आई है क्या ये इमोजी? कलर वाज ऑसम. Feature. Which feature is highlighted here? Perfect. It's a continuous process. Good. So with this, we have come to an end of the session today, and we will be meeting at sharp 8 p.m. only on YT यानी कि YouTube, जहाँ पे मैं आज आपको बहुत बड़ी एक चीज रिवील करूंगी. So don't miss today's session. Unacademy की ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैं 2 फीचर्स आएंगे, वो सब्सक्रिप्शंस आएंगी, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस के फीचर्स आपको बताती हूँ. आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं. आपके सारे सब्जेक्ट्स एक छत के नीचे कवर होंगे. आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ हैं. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, कोई भी पॉइंट टॉपिक छूटेगा नहीं. प्रॉपर मोटिवेशन दी जाएगी, स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, लाइव टेस्ट सीरीज. अगर आप 12 मंथ्स की लेते हैं यू हैव टू पे 1250 रुपीज फॉर अ मंथ, और अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं यू हैव टू पे 1042 रुपीज फॉर अ मंथ. सेकेंड इज आइकॉनिक, जो बच्चे ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, मोटिवेशन होएगा. सलोनी डोंट मिस द सेशन एट 8 PM. अ बिग थिंग इज कमिंग ऑन द वे. 1-on-1 मेंटर के साथ पढ़ सकते हो. आओ तो सही जिया, बताती हूँ सब खबरें तुम्हें. सारे डाउट क्लियर होंगे. वीकली रिपोर्ट्स दी जाएगी. आपके पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में रहेंगे. स्टडी प्लानर्स आपके लिए बनाए जाएंगे. और तो और आपके प्लस के सारे फीचर्स भी यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो यू हैव टू पे 2333 रुपीज फॉर अ मंथ, और 24 मंथ्स की लेते हो तो यू हैव टू पे 2000 रुपीज फॉर अ. हमारा 29 ऑफ जनवरी को प्रोडिजी है, जहाँ पे आप अपीयर करके बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो. द स्केड्यूल फॉर द सेम इज टेस्ट नंबर 2 29 ऑफ जनवरी. अपनी अपनी क्लासेस के हिसाब से आएंगे और टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे. These are the rewards for the 29 January, जो कि रैंक 1 से लेके रैंक 100 तक का है, which includes Mac book, Apple iPhone, iPads, Amazon Eco Dots, vouchers and etc. हमारा लेटेस्ट ऑफर, जब आप
31 यानी कि मंडे तक है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस या आइकॉनिक की 1 ईयर अबव, तो आपको उसके साथ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर परचेज फॉर आइकॉनिक एंड प्लस। तो ये पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, जल्दी से जल्दी लेंगे ताकि ये ऑफर हाथ से निकल ना जाए। Bugs Bounty, a special feature organized by Unacademy in which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below. Form is provided. आज अमरीश तुम्हें बताती हूँ शाम को 8 बजे. You can go to the description below. Form is provided. Fill the form and claim your reward if you will be the first one. नए बैचेस शुरू हो गए हैं, यहाँ पे आप स्पार्कल कर सकते हो, शाइन कर सकते हो टर्म 2 को बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द country. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe the video. We'll be meeting at sharp 8 p.m. A very big thing on the way. A big surprise for all of you and don't miss the session today at sharp 8 p.m. ठीक 1 घंटे बाद हम फिर मिलेंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म पर. Till then, take care of yourself. Bye bye, everyone.